वो पीछे है। सब मिलके गाएंगे। वही कर लेंगे, वो हनुमान की तरह ही करना है हमने ऐसे। जैसे कोई खुश रहे तैसे ही खुश करो उसको। हम क्या करें? आओ बोलो भाई, यहाँ पे आओ मेरा सारे चलो, सारे चलो। वन बाई वन। आओ। इधर देख के सर बोले सारे बच्चे भी गाओ, ठीक है? बच्चे रघुपति राग आता है ना आपको? रघुपति राग चलो सबने गाना है। हो गया सर। आगे पीछे हम गाएंगे, सभी गाएंगे। फोटो से फोटो से पीछे से आओ, ऐसे खड़े हो ना, ऐसे चलो स्टार्ट। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय हिंद। माने जाते हैं शांति के और शांति और सच्चाई के, ठीक है? तो हमें उनके ये जो उन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं उनको हमने फॉलो करना है अपनी लाइफ में। अहिंसा, नॉन वायलेंस और ट्रूथ को हमने अपनी लाइफ का एक मोटिव बनाना है। हमने उनके दिए गए जो सिद्धांत हैं उन पे चलना है। तो उसी उपलक्ष्य में और साथ में ये भी है, गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे और इसीलिए यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2 अक्टूबर को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो है वो घोषित किया गया है। हम तो मनाते ही हैं ये दिन, लेकिन इंटरनेशनली भी ये जो दिन है वो नॉन वायलेंस के लिए मनाया जाता है। तो इसके लिए जोरदार तालियां गांधी जी के लिए। अपने देश को और अपने जो वर्ल्ड को ये लेसन दिया था कि हमने नॉन वायलेंस के साथ कैसे आगे बढ़ना है। तो 2 बच्चे हैं जो 12th के स्पीच बोलेंगे इन पे। एक है 11 का बच्चे बोलना, हाँ प्लीज सिमरन राजपूत, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड स्पीक ऑन गांधी जयंती। एंड सेकंड वन इज पूजा देवी, ठीक है? तो प्लीज जोरदार क्लैपिंग इनके लिए। Good morning, respected principal ma'am, teachers and my dear friends. Today I am here to share my views about Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd October every year to mark the birth anniversary of Mohandas Karamchand Gandhi, who was famously known as Mahatma
Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was a great leader of India. He fought for our independence by following the principles of peace and non-violence. He started many important movements like Civil Rights Movement, Dandi March, Quiet India Movement, etc. Friends movement. Friends, Mahatma Gandhi believed in simple living and high thinking. He is also known as Babu and father of the nation. His great leader of our country. His last on 30 January 1948. Friends, in India, Mahatma Gandhi's birthday, 2nd October, in national holiday. Globally, Gandhi's birthday is celebrated as the International Day of Non-Violence. On his day, many schools, colleges conduct speech, essay, drama, and other competitions. For student friends, today whole world is the followers of the teaching of the Mahatma Gandhi, which gave value not only India but also to the world. He fought consequently against British rule for independence of India. He started Satyagraha movement for Indian freedom struggle. Under his leadership, India got independence on 15 August. Mahatma Gandhi was against addiction like smoking and drinking. He was against untouchability. He has set an ideal example of patriotism, sacrifice, non-violence, and simplicity. Thanks and have a nice day. Good morning, respected principal ma'am, teachers, and my dear friends. Today I am come here to share my views on Mahatma Gandhi. It is with great pride and honor I want to say a few words about father of our nation, Shri Mohandas Karamchandra Gandhi. The world will celebrate the 152nd birth anniversary of Gandhi. Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869. People friendly called him Bapu. He is known for his non-violent way to fight for independence. Gandhiji completed his early study in British rule India and then went on to pursue law in England. After practice law in South Africa, she returned to India in 1915 and became a part of the Indian freedom struggle. He led important movements like non-cooperation, Dandi March, and Quit India movement. He is the man who played a significant role in achieving independence for India from British rule. He helped to free India by a unique method of non-violence. Gandhiji proved to the world that freedom can be achieved through the path of non-violence. Gandhiji is a synonym of peace and truth. In India, history will always write the name of Mahatma Gandhi in golden texture. His greatness can't be described using all the adjectives found in the dictionary. He was such a great person who not only impacted India but also abroad. Thanks and have a nice day.